Hello students. Beta, in my last video we discussed about examples of a subgroup. Then we will start product of two subgroup. Counting principle. Product of two subgroups. Okay. Let H and K two subgroup of G, of a group G. ठीक है बेटा. Then HK we write small hk. Okay. Such that H belongs to H and K belongs to K. Okay beta. Clear? Then this one is called product of two subgroup H and K. Okay. If H and K two subgroup, then HK is called product of two subgroup. Okay. Next, beta, it is not necessary. If H and K are subgroup, then product is also a subgroup. बेटा मैं एक एग्जांपल रख रहे हैं. गिव एन एग्जांपल टू शो दैट H and K two subgroup of G, subgroups of G, but ਜਿਹੜੀ product है बेटा H के need not be a subgroup of G. Okay beta, my favorite example, symmetric group S G I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3. Symmetric group consider कर ले बेटा. Let H I 1 K I 1. Okay बेटा. Okay. H and K two subset of G. Okay बेटा. First we prove H and K subgroup of G. First की प्रूव करेगा H is a subgroup of G. बेटा H I 1, बेटा A I B कितना बेटा 1. So A B inverse A कितना बेटा I same image and B 1 2 2 1 3. Okay. 1 2 3. 1 the image 1, 1 the image 2, 2 the image 2, 2 the image 1, 3 the image 3, 3 the image 3, 1 2. This one belongs to H. So H is a subgroup of G. Similarly K की आ गया बेटा subgroup of G. Then HK product लो बेटा इसकी I 1 3 1 2 into I 1 2 1 3 1. Okay. I 1 3 1 2. So ये प्रोडक्ट की बनेगी बेटा 1 3 2. Okay. To prove HK not a subgroup, product of two subgroup need not be a subgroup. So 1 2 A B 1 3. Then A B inverse. A कितना बेटा 1 2. B 1 2 3 3 2 1. So A 1 2 3
2 the image 1, 1 the image 2, 2 the image 1, 3 the 3. B inverse. B inverse beta 3 2 1, 1 2 3. So this one equal to 1 2 3. 1 the image 2, 2 the image 2. 2 the image 1, 1 the image 3. 3 image 3, 3 the image 1. So 1 2 3. 1 the image 2, 2 the image 3, 3 the image 1. This one does not belongs to HK. देखो बेटा HK ਦੇ ਵਿੱਚ this one does not. So HK not subgroup of. So clear है बेटा, product of two subgroup. Okay, we consider H and K two subgroup. Then this one is called product of two subgroup. मैं एक एग्जांपल रखा बेटा जिस शो किया है H and K are two subgroup, but HK need not be a subgroup of G. हमने एक लास्ट एक मैं थ्योरम करवानी है बेटा. In theorem H and K two subgroup, product HK is also subgroup if and only if HK equal to KH. बेटा कंडीशन होती है if HK equal to KH. बेटा थ्योरम में करवानी है भाई. We start this theorem, then key condition है बेटा उत्थे if HK equal to KH. Okay, one method बेटा. Second, मैं प्रूव करने लग गया बेटा this one, but अपन शो कर रहे हैं बोले because HK not a subgroup. बेटा मैं हूँ कि क्या भी HK subgroup of G हो सकता है, possible. HK is a subgroup of G possible if HK equal to KH. बेटा we check HK I 1 3 1 2 1 2 3 1 2 3. Okay, HK बेटा उरे भी मेरी मिस्टेक सी HK कितना ना सी 1 2 1 3. Okay, so 1 2 3. So A 1 3, B 1 2. Okay बेटा, A 1 3, B 1 2. B inverse पहला B देखियो बेटा 1 2 3 2 1 3. A B inverse 1 2 3 3 2 1. B inverse 2 1 3. B inverse 1 2 3. Okay, 1 2 3. 1 the image 3, 3 the image 3, 2 the image 2, 2 the image 1, 3 the 1, 1 the 2. We get 1 3 2. 1 the image 3, 3 the image 2, 2 the image 1. Does not belongs to HK. Okay, so HK not a subgroup of G. But in next theorem we prove HK is a subgroup of G if HK equal to KH. So HK then KH I 1 2 1 3 1 3 1 2. This one equal to I 1 2 1 3 1 3 2. So HK not equal to KH. देखो HK not equal to KH. So G is not a sub. मतलब प्रोडक्ट जी हैगी है प्रोडक्ट नॉट ए सब. सो बेटा थ्योरम स्टार्ट कर लगे. बेटा थ्योरम if H and K are two subgroup of a group G, then HK is a subgroup of G. Okay, if and only if HK equal to KH. बेटा given let अपने की कंसीडर कर ले HK is a subgroup of G. Okay, to prove HK equal to KH. So to prove HK subset of KH and
KH subset of HK. Okay, HK subset of KH and KH subset of HK. First, we prove HK subset of KH. Okay, बेटा सबसेट प्रूव करना. लेट सबसेट बेटा किस तरह प्रूव कर देने आपको. जो एलिमेंट HK च है then all element of HK in KH. All element of HK contain in KH. Okay. Let X belongs to HK. Any element X belongs to HK. So X inverse also belongs to HK. Why? Because HK की है बेटा subgroup of G. HK की given है बेटा subgroup. So X inverse we write HK because HK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਬੇਟਾ small hk such that H belongs to H, K belongs to K. So X HK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ X ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ HK ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਏ H1 K1 H2 K2 this one. ਮੈਂ X ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ X ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ. ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਲੈਟ H. ਓਕੇ H belongs to H and K belongs to K. H1 K1 H2 K2 ਐ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ. X ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ HK. ਓਕੇ X ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ X ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ. ਸੋ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ HK ਦਾ ਇਨਵਰਸ. This one equal to K inverse H inverse. Beta, this one belongs to KH because K belongs to K. So K inverse belongs to K because K is a subgroup. Inverse exist करते हैं. Okay. My last video beta theorem proof किस कितनी मैंने इसके बीच. So ਇਨਵਰਸ ਓਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ H subgroup AB belongs to H, A inverse belongs to H, A belongs to H. So beta use this. ਜਾਂ definition use ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ H subgroup possible if satisfy four postulates closure associative identity inverse. Similarly H belongs to H. So H inverse belongs to capital H because H की है बेटा subgroup. So X belongs to KH. First X किस belong करता सी H के, then belongs to KH. So HK subset of KH. Okay. Next to prove. Next we prove KH is a subset of HK. Okay. KH is a subset of HK. Let X belongs to KH. Okay. X किस belong कर रहे KH. So X equal to small k H. For K belongs to K and H belongs to H. Clear everything? So X inverse KH the inverse because to prove X belongs to HK. Okay. So X inverse this one equal to H inverse K inverse. बेटा H inverse किस belong करता है H. K inverse किस belong करता है K. So X inverse belongs to HK. HK की दिखता है बेटा अपन गिवन है HK is a subgroup of G. So X inverse the inverse भी किस होगा बता HK. So X belongs to HK. Clear है बेटा point. Okay. Conversely बेटा गिवन की है और let HK equal to KH. To prove HK is a subgroup of
G. Okay. To prove AB inverse belongs to HK for all AB belongs to HK. Beta A belongs to HK. So A ਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंट की लिख लिया बेटा A HK च belong करता है any one element of HK H1K. Okay. H1 belongs to H and K1 belongs to K. Okay. Next, B belongs to HK. B equal to H2 K2. H2 belongs to H. K2 belongs to K. So देखो बेटा A H1 K1 B H2 K2. Then AB inverse A H1 K1 B H2 K2 inverse. This one equal to H1 K1 K2 inverse K2 inverse H2 inverse. Okay. Then H1 K1 K2 inverse H2 inverse. Okay. बेटा K1 K2 किस बिलोंग करते हैं K? What is K? K is a subgroup. So K1 K2 inverse किस बिलोंग करके K? H2 inverse किस बिलोंग करता है बेटा H च. So K1 K2 inverse H2 inverse किस बिलोंग करके KH. बट अपन गिवन की है बेटा KH किस दे इक्वल है HK. So this one element belongs to HK. जिਵੇਂ मैं लास्ट में कितना सी X belongs to HK ਤਾਂ X ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਣਗੇ H1 K1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਣਗੇ ਨਾ ਬੇਟਾ. This one belongs to HK. So K1 K2 inverse H2 inverse equal to H3 Kth. H3 Kth. Reason this one belongs to HK. HK किस तरह के एलिमेंट है H1 K1 H2 K2 H3 K3. So मैं H3 K3 put at this. So AB inverse equal to H1 and this one equal to H3 K3. So H1 H3 K3. Okay. H1 H3 किस च बिलोंग करता है बेटा H1 भी H च H3 भी H च. Okay. H1 भी H च H3 भी H च. तो देन प्रोडक्ट भी किस च आ गई बेटा H च. K3 किस च बिलोंग करता है K च. So AB inverse belongs to HK. So HK की हो गया बेटा पहले subgroup of G. Repeat कर रहा है बेटा conversely. Let HK equal to KH. To prove HK is a subgroup of G. To prove AB inverse belongs to HK for all AB belongs to HK. So A belongs to HK. बेटा HK च belong कर रहा है. HK च किस तरह के एलिमेंट है H1 K1 H2 K2 H3 K3. H1 belongs to H, K1 belongs to K, B belongs to HK. Then B किधर इक्वल आ गया बेटा H2 K2. H2 belongs to HK. Then AB inverse. बेटा AB inverse. So H2 K2 inverse, K2 inverse, H2 inverse. We write this one. बेटा K1 K2 inverse K च belong करता है. Sorry K1 K2 K च belong. What is K? K is a subgroup. So K1 K2 inverse भी K च belong करेगा. H2 किस च बेटा H. H की है सबग्रुप इनवर्स भी H च बिलोंग करेगा. सो K1 K2 इनवर्स इनटू H2 इनवर्स किस च बिलोंग कर गया बेटा KH. KH किस दे इक्वल है बेटा HK. सो HK बेटा किस तरह एलिमेंट आ गए दिस वन HK च बिलोंग कर रहा है. देखो दिस वन बिलोंग्स टू HK.
सो किस तरह एलिमेंट आ गए H3K3. ओके, सो H3 belongs to H, K3 belongs to K. Then AB inverse belongs to H1 and this one H is the value put करती है बेटा H3 K3. H1 H3 H K3 K. So AB inverse belongs to HK. बेटा ये प्रूव करना से तो HK की हो गया बेटा सब ग्रुप. सो बेटा A is the product of two subgroup theorem. Very very important theorem beta. Then next video beta conclude this. So thank you very much.